Good morning, everyone. I'm going to start with a new topic, Cope's rule, which says that population lineages they tend to increase in body size over evolutionary time, which means that if a species is able to survive enough for a long time, then the members of that particular species they will grow in size with time. And we can take the example of dinosaurs. So this rule, it's also known as Cope de Paris rule. And then, while the rule has been demonstrated in many instances, it does not hold true at all taxonomical levels or in all clades. Larger body size is associated with increased fitness for a number of reasons. Although there are some disadvantages, both on an individual and a clade level, clades comprising larger individuals are more prone to extinction, which may act to limit the size of organism. So, before proceeding on to the explanation, let's take the UPSC perspective. So, UPSC, from the very nature of the examination, they are looking for specialists who are journalists in the outlook, or the specialists which can crisscross across various domains. So it's kind of a interdomain study. So for that reason, you need to have a general and comprehensive outlook whenever you look at anything, whenever you look at the question. And the first prototype of which will manifest in the form of a balanced approach while writing answers. So balanced approach, I mean, you need to consider both the positive and negative. Now, the positives and negatives, they can take different form in different domains. Like if you are studying political science, then the positive and the negative, they may take the form of principles and their criticisms, or policy and its successes and failures. In the same way, if there is a talk about a law, then the positive and negative, they will replicate in form of the working of law, the execution of law, and then lacuna or the shortcomings in the law. So ये balance approach है you must need, keep in your mind. So having said that, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Anthropology में जब when I talk about the balance approach, you need to consider both the aspects while answering the question. First, the postulates as they have been listed. So postulate जैसे भी uh, the originator, the theorist, जैसे भी उन्होंने वो postulates कहे हैं, the delisting of them, आपको वो याद रखना है. You can narrow it down in simpler or basic terms, but वो ज़्यादा deviate नहीं होना चाहिए. Simplification भी, it should not deviate from the actual postulates. ये तो हो गया. Then you need to look at the criticisms. So the presence of the principle and criticism will provide a balanced answer and will help in fetching good marks. So अब criticism जो है postulates का, वही same ये है कि scientific theory जितने भी होती हैं, most of them they have a time experience, so they can run for a certain time. फिर उसके बाद न्यू एज आती है, न्यू इंफॉर्मेशन, और कैन से न्यू काइंड ऑफ एनालिसिस, और फिर उस पे क्रिटिसिज्म होता है. फिर उसके बाद नई थियरी आती है, वो सर्टेन टाइम के लिए रहती है. फिर न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू एनालिसिस, न्यू एक्सप्लोरेशन, और फिर वो थियरी इट रिफ्यूटेड एंड न्यू थियरी कम. और ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में चलता रहेगा, बिकॉज साइंस इज अ लॉट डिफरेंट देन सोशल एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स. सो ये तो हो गया एक्स्ट्रा डोमेन स्टडीज. अब बात करते हैं कोप्स रूल की. सो दिस रूल, दिस increasing the size of species or the members of a species in an evolutionary time, this has been suggested and demonstrated in various examples.
but it does not hold true for all taxonomic level. So ये आपके आंसर को एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड करेगा कि yes, this is the way you should write, that yes, this has been demonstrated. We have many instances in which there have been gradual increase in size of species or the members of the species down the line, but this principle is not applicable at all taxonomic level or all clades. Then another balance approach is the advantages and disadvantages that are associated with increasing size. So larger body size is associated with increased fitness. अगर body size बढ़ेगी, because evolutionary timeline में आपको पता है the natural selection. So nature will select only those species or those aspects, those attributes, those perspectives, those characteristics, those features, those genes, those genotype, those phenotypes, कुछ भी कहें आप, from basic microorganism to the gargantuan species, natural selection, it favors the dominant one. So by dominant, I do not equate myself with Nazism or Adolf Hitler or any such racial stereotypes. By dominant, I mean that any individual, any characteristic, any trait, any feature, it should help in the survival of that particular member. And if that member is able to survive, it also means survival of the whole population. So natural selection acts on individual as well as populations. All right. So अब body size बढ़ रही है तो there must be some advantages. और advantages क्या है? Yes, that larger body size, it increases the fitness of larger individuals. अब वो कैसे बढ़ेगी? अगर body size ज़्यादा होगा, then you will be able to scare off predators. You will not be a prey. Then you will be able to protect your own clan, your family, your members. Even at least you can be able to protect yourself. Then you will have number of mating success, which means larger body size is favored evolutionarily, and you will have no issue in finding mates. And if you find mates, then your gene will prosper and proliferate via reproduction. So these are number of advantages that are associated with increasing body size. फिर जो disadvantages हैं वो ये है कि if you have a larger size, then you become prone to extinction. And this extinction is also a cap on the maximum size any organism can achieve. So disadvantages ये है that larger body size, it increases the visibility first, so you can be easily targeted. Let's take example. There are two species. One is a microorganism and another one is a macroorganism. Microorganism which cannot be seen by naked eyes, and then another which can be seen by naked eyes. Ab elephant versus a mouse. You take another example is there that has a size difference even if both of them they belong to macroorganisms. So elephant and mouse में अगर हम किसी भी predator की बात करें, because animal kingdom, most of the or all of the organisms, they are trying to survive the onslaught of time, and they survive by all the feeding mechanisms that are possible, that are available. So अगर एक herbivore है वो घास खाएगा, all the green vegetation that could be eaten. लेकिन if you belong to carnivores, which means you eat other animals, अब यहाँ पे your nutrition uptake, your survival, it depends on eating other animals. So the choice between you to either eat an elephant or a mouse.
So here, even if larger body size may act as a threat, may act as a stopper, and may limit the predator from acting on such a huge body size, but still there is a reward for it. There is an advantage for hunting a large animal, क्योंकि उसके साथ जो न्यूट्रिशन है it will be available in plenty. And if you are someone who live in a pack, for example you are a wolf or you are a lion, and now you have your own pack known as pride. अब उसमें जो चिल्ड्रन हैं, जो फीमेल्स हैं, यू नीड टू फीड देम. अब इसमें एक चूहों का शिकार करके यू वोंट बी एबल टू फीड योर होल फैमिली. सो ओनली bigger size with larger body fat will account into the equation. So ऐसी condition में larger body size is also prone to extinction. First तो ये हो गया by predation because of visibility. Second, the resource competition. अब large body size है, then you will need large amount of food for yourself. अब जैसे elephant की बात करते हैं, whichever niche it occupies, whichever area it occupies, अगर इस population को वहाँ पे छोड़ दिया जाए, with some time this whole population is going to eat the available vegetation that is present in that area. So your niche is going to be emptied out, and in that case you will find another area, and उस area में no area is unoccupied, वहाँ पे और भी predators होंगे. Then you will have a resource competition, and that resource competition may lead to your extinction, or it may act to limit the size of the organisms of the species you belong to. Then let's look at the effects of growth. This line starts with direction selection. It appears to act on organism size, whereas it exhibits a far smaller effect on other morphological traits. So एक अच्छी line है. उसके लिए let's first start with what directional selection is. So direction selection is a process in which some traits, some features which are survivable, which can help in survival, those traits will help this particular species to reproduce more. To put in another way, direction selection, it is about reproduction in a particular direction, which means rapid and successful reproduction. If you want to look at another way, so direction selection means rapid and successful reproduction, and the process underlies your traits. The process is based on your traits. If you have good traits, or if you have survivable, if you have better traits, then your species is going to reproduce more. That is the meaning of direction selection. And this line says direction selection appears to act on organism size. So यहाँ पे जिस better trait की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है. The body size. Body size is a physical trait. Now this physical trait, it helps in a population to achieve rapid and successful reproduction. और वही उसी की बात चल रही है कोप्स रूल में, that if your species, if the members of your species have a larger body size, then they are likely to reproduce more and faster. So this is the meaning of this particular line. And its second part, whereas the same directional selection, it exhibit a far smaller effect on other morphological traits. So again, दूसरे तरीके से कहते हैं इसको, directional selection, अगर आपके पास, if you have better traits, then you are likely to reproduce more. And evolution, natural selection, genetics, population genetics, molecular genetics, evolutionary biology,
जिनकी भी बात करें, all of them, they are they have a core attribute, a core actor, that is reproduction. क्योंकि अगर reproduction नहीं होगा, then the population is not going to move forward. और population आगे नहीं जाएगी, the passage of genes won't be there. Genes आगे नहीं जाएंगे, then the genetic code, which is the basis of all the organism, it stops there. और वही नहीं है, core actor ही नहीं है, then film का कुछ मतलब ही नहीं है. So that's why direction selection, it is a way of boosting the better traits to achieve better reproduction or faster reproduction. But direction selection, it acts on certain traits only. It does not act on all the traits, all the better traits. So इस लाइन का मतलब यही है कि अगर बॉडी साइज की बात हो रही है, इफ यू हैव ग्रेटर बॉडी साइज, देन यू आर लाइकली टू अचीव higher fitness and more reproduction. But it does not mean आपके पास अगर कोई और भी अच्छा trait है, better trait है, or other morphological trait, so it does not mean direction selection DS will also act on them. And even if it act, it will have far smaller effect on them. Then this win or loss game is this selection pressure of win or loss. It is explained by a number of advantages. और advantages जैसे आपको बताया, the root actor is reproduction, mating success and survival. अगर आप जिंदा रहेंगे तभी आप तभी you will have a mating success, तभी आप reproduce करेंगे. So all in all, the core actor, reproduction, it decides everything, win or loss. Let's say even if some member of a species, if that member, if it lives up to 80 years of age, and that also successfully foraging all the available niches, eating away all the predators, killing all the nefarious and notorious predators, that competitors, and achieving you can say a philosophical good life, a good life in sense. But iske baad bhi, if that species, if that member, if he has not mated with anyone, if he has not reproduced, the game is lost. That's the key. Even इंसानी दुनिया में भी आप देख लीजिए, इन ह्यूमन स्पीशीज एज वेल, जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैरिज वगैरह जो हैं, they have a single core factor, that is reproduction, that is transmission of gene and forward passage of lineage, जिसको कहते हैं वंश आगे बढ़ाना. So यही है रूट. Then next passage, the success is, for example, large organisms find it easier to avoid a fight of predators. So अगर body size large है तो कैसे ये selection pressure है, that larger body size, they can easily avoid a fight of predators, they can easily capture prey, they can find mates to reproduce, they can kill competitors, and they can temporarily survive lean times, and they can also resist rapid climate changes. They may also potentially benefit from thermal efficiency, increased intelligence, and a longer lifespan. So यहाँ पे जो समझाने लायक है, ये सब तो आपको समझ में आएगा, that they can kill off predators, they can find prey, they can reproduce, they can survive temporary lean times, resist. अब जो समझाने लायक हैं, to resist rapid climate changes and better thermal efficiency, increase intelligence and longer lifespan. तो ये देखिए, जो भी बॉडी साइज है, अगर वो लार्ज बॉडी साइज है, सो सिंपल सा नियम है इवोल्यूशन में कि इफ ऑल द फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, अ मेंबर
जितना टाइम उसके यंग होने में लगेगा, the same time will take to get old. In other words, आपके एक पर्टिकुलर मेंबर का जो इवोल्यूशनरी पैरामीटर है, particularly the growing age. So the growing and the senescence, both of them, they equate themselves. And in another words, if you take long to get young, then you will also take long to get old. ये समझाना पड़ेगा. So कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, the actual process, it start with the gametes. Gametes means the fusion. Gametes means sperm and ova, and the fusion of which will result in a zygote. अब ये zygote हैं will have binaries, alleles. Those allelic structure, that cellular structure, via DNA replication, it will lead to formation of tissues. Tissues will form organs, and organs will form organism. ये total process है. अब the factor which can be considered here is gestation time. Gestation time is the time taken by a particular individual to grow, the growing time. So हम human की बात करते हैं, we usually take around 10 to 12 years to achieve an age of maturity, the biological maturity known by the name puberty. So this biological maturity takes 10 to 12 years. So by the time we have, in all those 10 to 12 years, we have achieved certain amount of biological muscles. So those 12 years of muscles, they are not going to vanish in a few years. As I have said, other factors are constant. Other factors means natural calamities, natural selection, accidents, other biological diseases. So बाकी सब factor अगर constant हैं, then in that case, 10 to 12 years, it will develop some biological muscles, and those youthful muscles will take up certain time to maintain themselves, because in all those time, if your organism, your cellular structure, it has taken 10 to 12 years, then those 10 to 12 years, it have got you infused with energy, and that energy will not be dissipated uh, in a moment of time. It will take time to dissipate itself. So that's why we have a certain youthful age by which all of our organs are mature, and we, in our physiognomy, we have youthful flow of energy. Then that youthful flow of energy, it will be followed by a second stage, that is adulthood. And in that adulthood, now there is a gradual dissipation of energy. Gradual dissipation of energy. This gradual dissipation of energy, or gradual decrease of energy, it will lead to loosening of tissues. ये हम जो ग्रोथ वाला चैप्टर उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे. लूजनिंग ऑफ टिश्यूज. फिर देन उसके बाद onset of senescence, which means the old age. And old age it will also be gradual. It is not that a particular time, at particular instance, you are going to you're going to die. ये ऐसा भी नहीं होगा. जो जितना टाइम आपके जेस्टेशन में लगा है, उतना ही टाइम आपके क्या बोल सकते हैं, डिक्लाइन में लगेगा. सो दिस, यू कैन से,
इन मैथमेटिकली दिस कैन बी इक्वेटेड विद इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। तो जितना टाइम आपकी बॉडी को इंटीग्रेशन में लगा फ्रॉम अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जाइगोट sperm and ova के जाइगोट से you became a fully fledged human of flesh and bones. So that was the integration phase. फिर जो disintegration phase होगा वो भी आपका gradual होगा। और वो कैसे होगा? That your body it will start losing up energy, and those losing of energy it will start from the periphery. फर्स्ट टिश्यू से फिर ये आएगी मसल्स से फिर ये आएगी स्केलेटल्स पे यानी बोन्स पे। देन ऑल ऑफ योर ऑर्गन्स वो धीरे धीरे उनको उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं मिल पाएगी, एंड देन बिकॉज ऑफ रप्चर्स, टियर एंड वेयर, इतने सालों के एग्जिस्टेंस के बाद जो योर मसल्स, योर बॉडी ऑल्सो face the onslaught of time in terms of weariness, diseases, fractures, muscle ruptures, weakening। ये सब धीरे धीरे ये साइंस है that your body is losing out। फिर ये धीरे धीरे जो सेल्यूलर डिवीजन है, दिस प्रोसेस विल बी अफेक्टेड बिकॉज जब तक सेल्यूलर डिवीजन है आपकी बॉडी चलती रहेगी। एंड सेल्यूलर डिवीजन ये दिस इज अ फैक्टर ऑफ एनर्जी। एनर्जी है तो सेल्यूलर डिवीजन है, सेल डिवाइड हो रही है देन यू आर हेल्दी। लेकिन जब सेल्यूलर जो डिवीजन है it it is affected, it is influenced to a greater extent, then you start into a degeneration stage, and that degeneration stage will ultimately end at the death। so ये है टोटल प्रोसेस जो आपको बताया कि इसमें होता है। सो इसीलिए बताया कि लार्ज बॉडी साइज है देन यू विल हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। लार्ज बॉडी साइज मीन्स you will have large resources, large resources mean you will have more energy means your cell will divide more, your cell will be healthy, your organs, your tissues, all of them, they will have a constant supply of energy। और जब तक constant supply है and जब तक आपकी cells and muscles they can maintain the what you can say the test of time, your body will go on। और वो डिसाइड करता है कि आपका लाइफ स्पैन कैसा होगा। अल्टीमेटली इन शॉर्ट लार्ज ऑर्गेनिज्म यूजुअली हैव लॉन्ग लाइफ स्पैन। फिर लार्ज बॉडी है दे विल हैव बेटर थर्मल एफिशिएंसी। अब थर्मल एफिशिएंसी मींस you can cool your body, a large body will definitely cool itself faster than other body types। वो कैसे? सपोज आपने फर्श पे पानी गिरा दिया, पोछा लगाया। So what you did, you increase the area of that liquid water, और उसकी वजह से जो सिंपल हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर था उसका एरिया आपने इसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर से यू इंक्रीज अप टू बाय 10 by 10 फीट। इट मीन्स 100 स्क्वायर फीट एरिया आपने उसका बढ़ा दिया। अब इसकी वजह से इवेपोरेशन विल बी मोर। इवेपोरेशन की वजह से ये सरफेस जो है, ये जो हाफ अ ग्लास ऑफ वाटर है इट विल इवेपोरेट इन अ फ्यू मिनट्स। लेकिन यही हाफ ए ग्लास ऑफ वाटर अगर आप किसी कंटेनर में इन कह सकते हैं ये इसी एक स्टील या एक प्लास्टिक के ग्लास में, किसी ग्लास में आप उसमें रखें, वो 1 या 2 दिन भी वो इवेपोरेट नहीं होगा। सो दैट्स द मैकेनिज्म हियर। अगर लार्ज बॉडी साइज है सो यू विल हैव मोर सरफेस एरिया, योर बॉडी विल हैव मोर सरफेस एरिया, और उसकी वजह से जो आपकी इंटरनल हीट है इट विल बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। जैसे पोछा लगाते हैं वैसे ही जो इंटरनल स्वेट है इट विल बी स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, और उसकी वजह से ये स्वेट जो है ये बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाएगी।
और इवेपोरेट होने से you will have a cooling sensation, और इस cooling sensation को बोलते हैं better thermal efficiency, that your body will be able to regulate all kinds of temperature, especially the higher ones. फिर उसके बाद है offsetting disadvantages, large organism they require more food and water. अब देखिए ये था पॉजिटिव, अब ये है नेगेटिव. अब डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, दैट लार्ज ऑर्गेनिज्म दे रिक्वायर मोर फूड एंड वाटर. सो ये भी एक उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल पे एक कैप है, क्योंकि हर जगह पे दे आर नॉट गोइंग टू गेट इनफ फूड एंड वाटर, एंड इवन इफ दे इज अवेलेबल, हर निश में दे आर कंपेटिटर्स, दो दैट कंपटीशन इज लाइकली टू इंटरफेयर with the consumption of required food and water. या तो they will ensure a struggle in which either of you two will live, या फिर that resource crunch may may affect your own population. So first ये cap है. Then second, large organism they shift from R to K selection. अब ये और देखना है ये R to K selection क्या है. So R to K selection is a population ecology theory. Explain करते हैं इधर, known as RK population ecological theory, and this is governed by two hypotheses. First one is R selection and the second one is K selection. So is R selection is a scenario in which you will have more offspring and little care. In the K selection, you will have few offspring and more care. अब ये दोनों सिचुएशन जो हैं, how are they likely to unfold in real life scenario? So जैसे अब यहाँ पे दिख रहा है that you are having more offspring but little care. ये स्पेशली कैसे टाइम में होता है, when there is resource crunch, जब एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज कम होते हैं, when there is a lot of competition, when the situation is unstable, and in those time जो पेरेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट all organisms that belong to animal kingdom. So all of them during those tough and testing time, they resort to such reproductive tactics कि बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, देखते हैं इनमें से कोई ना कोई एक दो तो जिएगा ही जिएगा. और यही सेम कंडीशन जो थे वो इंडिया में भी थी, स्पेशली ड्यूरिंग medieval time, and this time also lasted up to the freedom struggle, up to the time of freedom struggle. जिस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत हाई थी, हाई ग्रोथ, लेकिन डेथ रेट भी बहुत हाई थी. तो इसका मतलब क्या है, दैट पेरेंट्स दे आर रिप्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन, हर एक के 10-12 7-8 इतने बच्चे थे, और उनमें से दे डिड नॉट नो हु इज गोइंग टू सर्वाइव. सो इसीलिए उनकी ये स्ट्रेटजी थी रिप्रोडक्शन के लिए कि ओके, वी आर गोइंग टू हैव एज मेनी ऑफस्प्रिंग एज पॉसिबल, एंड बाकी बिकॉज इट्स द टाइम एंड ऑल्सो मैनी देयर वर मैनी फैक्टर्स, क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल फैसिलिटीज़ और जो रिप्रोडक्टिव नॉलेज हैं, एजुकेशनल सिनेरियो, ये सब नहीं था. सो बोथ ऑफ देम वर हाई, और ये एक तरह से स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन मैकेनिज्म था कि ग्रोथ रेट हाई है तो डेथ रेट भी हाई. 10-12 बच्चे कर रहे हैं, उनमें से दो ही पैदा हो रहे हैं, दो ही बच रहे हैं, दो ही सर्वाइव कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली सिचुएशन ये थी. यही आप सीन जो है अपने आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें भी ये चीज़ देख सकते हैं, दैट जनरली a female dog, she lays a whole litter of puppies,
एक साथ ही 7-8 पपीज होते हैं और उनमें से कोई एक दो ही सरवाइव करते हैं. सो दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ आर सिलेक्शन. फिर के सिलेक्शन, स्पेशली स्टेबल टाइम, और इसका एग्जांपल हम ह्यूमंस में ले सकते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग आफ्टर द 1991 लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स, जब बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज हुए, मेडिकल फैसिलिटीज आई, एजुकेशनल एडवांसमेंट्स हुए, सोशल नॉलेज, फैमिली प्लानिंग, है ना, ये सब अवेयरनेस वगैरह हुआ. तो उसके बाद वही जो स्लोगन, हम दो हमारे दो. सो ये वाला जो होता है के सिलेक्शन, that parents are going to have fewer children, but only fewer children को they are taking more care. So this is an instance of K selection. अब सेम यहाँ भी देखते हैं इस वाले में, if organisms they achieve larger size, then they shift from R to K selection, क्योंकि अब लार्ज बॉडी साइज हैं और उनको भी पता है कि अगर लार्ज बॉडी साइज के बहुत सारे अगर ऑफस्प्रिंग्स होंगे, होल लिटर ऑफ लार्ज डायनासोर्स, लार्ज ऑर्गेनिजम्स अगर होंगे, so ultimately they will become a liability to that particular environment, और liability होते ही the whole population is going to extinct. So ऐसे सिनेरियो में the best way is to case selection, have fewer offspring, more gestation time and more care. And then the longer generation time means longer period of reliance on the mother, and on a macroevolutionary scale, restrict the clade's ability to evolve rapidly. Okay, ये भी आपको देखते हैं, भी समझाते हैं. अगर लॉन्गर जेस्टेशन टाइम होगा, स्पेशली अब ह्यूमंस में भी देख सकते हैं या बहुत सारे मैमल्स में, यू कैन सी दिस, दैट इफ द जेस्टेशन टाइम इज लॉन्ग, जेस्टेशन टाइम लॉन्ग होता है, इसका मतलब होता है कि जो चाइल्ड होगा, it will be nursed by mother for a long time and a long period reliance on the mother. तो इस वजह से रिसोर्स कैपेसिटी में अगर आप देखें या रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स कंजम्पशन देखें, उन दोनों का ग्राफ देखें, रिसोर्सेज अवेलेबल कितने हैं और कंज्यूम कितने हो रहे हैं, यहाँ पे जो आउट ऑफ थ्री द बेसिक यूनिट ऑफ फैमिली इन विच मदर, फादर एंड एन ऑफस्प्रिंग, जो ये 3 यूनिट है, इसमें ये दोनों जो हैं, मदर एंड ऑफस्प्रिंग, दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड. अब इनका कंजम्पशन हो रहा है, बट देयर विजिबिलिटी ऑन द रेडार ऑफ प्रेडेशन इज लेस, क्योंकि ये लंबे टाइम तक, लेट्स से करीब 10 साल तक दे हैव बीन लॉक विद ईच अदर, एंड फिर उसकी वजह से द मेल वन, इट कैन easily survive on the visibility radar. First, कि जो मैक्सिमम क्या बोल सकते हैं, ensuring of food, ये it becomes the primary responsibility of male. उसके लिए जो भी उनकी जो टैक्टिक है, predation, competition, fight, survival, ये these mechanism they become prominent. उसकी वजह से मेल जो है जनरली दे ग्रोज इन साइज, और यही इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी मेल्स होते हैं, स्पेशली दी मेल्स ऑफ एनिमल किंगडम एंड मैमल्स, देयर इज अ certain tendency for the males to grow in size, which is known as sexual dimorphism. तो इस कंडीशन में जो जितने भी मेल होते हैं, they are far larger in size than the female ones. तो आप ये गोरिल्ला में देख सकते हैं, प्राइमेट स्टॉक में ये चीज़ जो है विजिबल है. गोरिल्लाज में जो सिल्वर बैक है, वो बहुत, उसकी साइज और फीमेल गोरिल्ला की साइज जो है बहुत डिफरेंस है. इवन ह्यूमंस में आप देख सकते हैं, होमोसेपियंस के अंदर, उसमें भी मेल और फीमेल की जो साइज है ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज और पर्टिकुलर लोकेलिटी, उसमें भी आप देखेंगे कि साइज में डिफरेंसेस होते हैं. तो ये भी एक इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से जो रिस्पॉन्सेज हैं
especially uh, with respect to increase in size, it is capped, it is limited. और अल्टीमेटली यही होता है कि मैं जो मदर एंड ऑफस्प्रिंग है दे आर लॉक इन फॉर मोर टाइम। उसकी वजह से इनकी जो जो फिजियोग्नॉमी है, जो फिजिकल साइज है, वो उतनी इंक्रीज नहीं होगी जितनी मेल की हो रही है। अल्टीमेटली ओवरऑल जो स्पीशीज है उसकी साइज भी इसी लॉन्गर जेस्टेशन की वजह से लिमिट में रहती है। देन लेफ्ट अनफेटर्ड means left uncontrolled, the trend of ever larger size would produce organism of gargantuan proportions, means बहुत बड़ी साइज के। अगर ये जो मैकेनिज्म है, डायरेक्शन सिलेक्शन है, ये कंट्रोल नहीं किया गया तो धीरे धीरे ये जो साइज जो है ये बढ़ती ही रहती है। सो दे मस्ट बी सम फैक्टर टू लिमिट दिस प्रोसेस। थोड़े बहुत तो यहाँ पे डिसाइड किए हैं, डिस्कस किए हैं। So at one level, it is possible that clades increase vulnerability to extinction as its member become larger, means that no taxon survive long enough for individual to reach huge sizes. फिर ये भी है कि अगर कोई पॉपुलेशन साइज में बढ़ती रहती है तो इट ग्रेजुअली कम्स क्लोजर टू एक्सटिंक्शन, और उसकी वजह से कोई भी स्पीशीज जो है वो इतनी ज़्यादा, इतनी लार्ज साइज में, ह्यूज साइज में नहीं पहुंच पाती, बिकॉज their population is capped by extinction, and they are also physically imposed limits to size of some organism. ये भी यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब फिजिकली इम्पोज लिमिट्स कौन सी हैं? फर्स्ट, insect they must be small enough for oxygen to diffuse to all parts of their body. तो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि their body is almost hollow from inside, और ये hollowness जो है ये it helps in diffusion of oxygen, water and various nutrients. So this is certain cap on the body size. अगर इससे ज़्यादा अगर उनमें बॉडी में वेट आता है, देन ये जो लाइटनेस है, द हॉलोनेस है, इट विल गो अवे, इट विल वैनिश। और वो होगी देन दिस द insect species will arrive at the extinction gateway. सो एक तो ये लिमिटेशन होती है। सेकंड, द फ्लाइंग बर्ड्स दे मस्ट बी लाइट इनफ टू फ्लाई। ये भी आप समझ रहे हैं, अगर बर्ड्स जो हैं इफ दे गेट fatty, if they get fatter, they will not be able to fly for long distances. यही आप एमो में, कीवी में, ऑस्ट्रिचेस में देख सकते हैं कि जैसे ही साइज बड़ी होती जाती है, उनका जो उड़ना है, पिकॉक्स में देख लीजिए आप, उनमें भी मुर्गे जो होते हैं उनमें देख लीजिए कि जैसे साइज बड़ी होती जाती है, it becomes difficult for them to fly for long distances or fly at greater heights. Then the length of giraffe's neck, it may be limited by blood pressure possible for the heart to generate. तो फिजिकल जो लिमिटेशंस हैं इसमें ये भी है, जैसे जिराफ की नेक है, दे आर नोन फॉर देयर लॉन्गर नेक्स, लेकिन अब नेक पे जो ब्लड पहुंचना चाहिए, the blood which should have reached there, it is ultimately pumped up by the heart, and no heart is possible, no heart is powerful enough to pump blood for very long distance. ये भी नहीं, पॉसिबल नहीं। हमारी बॉडी को देख लीजिए, जो हार्ट है, इट पंप्स ब्लड टू एवरी नूक एंड कॉर्नर इन अ बॉडी, लेकिन यही जो जो पंपिंग मैकेनिज्म है, इट कैन नॉट वर्क टू ग्रेटर डिस्टेंस। फर्स्ट, जो कैपिलरी एक्शंस हैं बाय विच blood is pumped up to various organs, ये भी, इसके भी लिमिटेशंस हैं। कैपिलरी एक्शन आप समझ रहे हैं, ये ग्लास ऑफ वाटर इसको भर दीजिए, देन उसके अंदर एक सिंपल पाइप डालिए, देन यू विल फाइंड दैट जो पाइप में वाटर का लेवल है वो ग्लास के वाटर के लेवल से ज़्यादा है। दिस इज़ द कैपिलरी मैकेनिज्म, कि आप लार्जर अगर स्ट्रक्चर में, अगर एक थिन स्ट्रक्चर अगर आप
ultimately insert in it. So the level of liquid or fluid in that thin structure, in that structure with less diameter, it will be more than what is contained in the container. यही एक्शन जो है हमारी बॉडी में होता है, जो वेन्स एंड वो अगर वो जो हैं वेन्स एंड आर्टरीज हैं, और जो ट्रीज के अंदर जो वो वाटर मैकेनिज्म है, उन सब का भी सेम स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्रीज में और जो एनिमल किंगडम में जो फर्क होता है, दैट इज द एंटिटी दैट इज हेल्पिंग द कैपिलरी मोशन। हार्ट पंप करता है, और कैपिलरीज स्पेशली द वेन्स एंड आर्टरीज बिकॉज ऑफ देयर वेरी लेस डायमीटर, उनकी वजह से ब्लड पहुंचता है। बट अगेन चैप्टर पे ही आते हैं। सो जिराफ नेक जो है, इट इज लिमिटेड बाय द limited power of the hearts to generate blood. And finally, there may be competitive element in that changes in size are necessarily accompanied by changes in ecological niche. इसका मतलब है अगर बॉडी साइज बढ़ेगी, then you will definitely go to a different ecological niche where you can find mates, food and water. जैसे जिराफ है, अब जिराफ को अगर आप किसी क्या कह सकते हैं गोल्फ कोर्स में छोड़ दें। अब जानते हैं ना कि गोल्फ कोर्स के अंदर जो घास होती है वो बहुत ट्रिम्ड होती है और बहुत ही वेरी क्लोज टू ग्राउंड। ऐसे में जिराफ जो है उस गोल्फ कोर्स में अंदर, या जिराफ की पूरी फैमिली गोल्फ कोर्स के अंदर दे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी बड़ा गोल्फ कोर्स हो और कितनी भी घास हो। बिकॉज यहाँ पे जिराफ को अलग निश चाहिए जिसमें टॉल ट्रीज हों। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब यही है कि अगर आप बॉडी साइज चेंज होती है, देन द गेम विल चेंज, योर निश विल चेंज, और उस निश में आपके जैसे बॉडी साइज के और भी होंगे, सो दे विल बी कंपटीशन। सो एग्जांपल इज गिवन हियर, terrestrial carnivore over 21 kg almost always prey on organism larger, not smaller than themselves। इस लाइन का मतलब है जितने भी कार्निवोर्स हैं who are over 21 kg weight, they almost prey on larger body sizes. So this means the competition will be there when niche changes. You will look up the ecological area where you can find both food and water, पर वहाँ पे और भी predators होंगे। एंड दिस रूल दूसरे कार्निवोर्स जितने भी हैं वो, अगर इसको शॉर्ट में कहें तो वो अपने से जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं पे अटैक करते हैं। सो अल्टीमेटली अगर आपकी बॉडी साइज ज़्यादा है, देन यू certainly you will become a prey. Fair. Let's talk about validity. So Cope recognized that clades of Cenozoic mammals appear to originate as a small individual, and उसके बाद the body size increased through clades history. So discussing the case of canine evolution in North America, the statement is here. Cope's rule, or the evolutionary trend towards larger body size, is common among mammals. Larger sizes enhances the ability to avoid predators and captures prey, enhance reproductive success, improve thermal efficiency, जो भी advantages हैं. Moreover, in large carnivores, interspecies competition for food tends to relatively intense. तो large carnivores जितने भी जैसे हम ले सकते हैं, wolf हो गए, lions हो गए, tigers हो गए. So इन carnivores में interspecific competition ज़्यादा होता है, and bigger species tend to dominate and kill smaller competitors. So these progenitors of hyper-carnivorous lineages may have started as relatively small body scavengers of large carcasses, similar to foxes and coyotes, with selection favoring both larger size and enhanced craniodental adaptation for meat eating. So यहाँ पे large carnivores के evolution की बात की है कि large carnivores they back in time
They may have started as smaller organisms such as foxes and coyotes, but because of this interspecific competition in which a larger body size kill the smaller one, तो smaller one eliminate होते जाएंगे तो यही बचेंगे. सो ग्रेजुअली उनके अंदर भी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन है. और नेचुरल सिलेक्शन का आपको पता ही है, वेरिएशंस तो होते ही हैं. एक स्पीशीज के अंदर 3 डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, ए बी एंड सी. अब उनमें रिलेटिवली फिजिकल डिफरेंसेस तो होंगे ही. उनमें से जो भी लार्जर बॉडी साइज का होगा वो स्मॉलर पे को खा जाएगा, दैट्स द रूल. और उसकी वजह से जो लार्जर हैं इट विल हैव मोर ऑफस्प्रिंग. तो लार्जर के ऑफस्प्रिंग बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वो भी लार्जर होंगे. तो इस तरह से evolution will keep traveling around the time. Then the last caveat, last condition, the increase in body size may represent a passive rather than an active trend. In other words, maximum size increase but the minimum size does not. So ये भी आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम साइज इट कीप्स इंक्रीजिंग. तो छोटे छोटे जो स्मॉल फॉक्स और कॉयट लुकिंग लाइक कार्निवोर्स हैं, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दे बिकम एज लार्ज एज हाइपर कार्निवोर्स. बट जो मिनिमम साइजेस होती है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट्स, तो मिनिमम साइज इट डज नॉट इंक्रीज. ये भी आपको याद रखना है. सो अल्टीमेटली ये एक और लाइन है दैट द कोप्स रूल इज सेंसो स्ट्रिक्टो but it should be considered an example of sensu lato. Both of these are Latin terms. It means strict sense. So यहाँ पे इसका मतलब है the Cope's rule it should not be considered in the strict sense but in general sense. Then finally the validity of Cope's rule, that the many paleobiologists they are skeptical of validity of Cope's rule, and for that matter they they have come to this conclusion that although size increasing more often than not, which means yes, size there have been instances of increasing in body size of organism, but this is not universal. This is the gist of it, which you should remember. And ये फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है. The Cope's rule is supported in many instances that all marine invertebrate phyla except mollusks they show an increase in size between Cambrian and Permian. Collectively dinosaur they exhibit an increase in body length over the evolution. So ये सब स्टेटमेंट है सपोर्टिंग कोप्स रूल. अल्टीमेटली ये लाइन आपको याद रखनी है. ये और इसके ऊपर जो बताइए आपको, the first there have been instances of increase in body size but this rule is not universal. इंसेक्ट वाला आप देख लीजिए. फिर जो लाइन है that Cope's rule should not be considered in the strict sense but as a general rule. So this is it. Thank you very much.